Hello everyone. I cleared DBF examination recently, and in this session I want to talk about how did I clear this exam and what did I do and what can you do as an aspirant preparing for either RBI, SEBI or NABARD examination, and simultaneously looking at DBF as something that you can do additionally in order to enrich your CV or your resume. In case you're watching this and you don't know about DBF, so DBF stands for Diploma in Banking and Finance. It's a small diploma or a certification, I can say more accurately, that is given by IIBF, Indian Institute of Banking and Finance. It's an institute created for the bankers by the banking community itself. So DBF helps in your RBI, SEBI or NABARD examination by enriching your CV because it's a bankers and banking oriented examination. And if the examiner or the interviewer sees that this student has done DBF before actually getting into this organization, then they take you more seriously, number one. And they also have more talking points because if you've cleared this examination, they know that you probably are more aware about basics of banking. And this point is very important because it's going to come again and again in our discussion today. Okay. So this is I got it framed because it gives us all confidence and it feels good to showcase it. You should do the same. Do not undersell yourself. It's very important to feel good about what you've done. Although it's a small certification, but in many organizations, all the scheduled commercial banks as well as RBI, it's a compulsory certification if you want an increment in your salary, and that is why it becomes so relevant. So I gave this examination in 2024. In Indian economy, let me share with you the marks because we'll discuss based upon these marks only. In Indian economy and Indian financial system, that is something that I teach to RBI, SEBI and NABARD aspirants as well on a regular basis. I got 80 out of 100, which is probably the highest or one of the highest in the country. And I felt very good that day when I wrote this examination because I knew that I'm going to get very good marks because I could feel that focus and I could feel myself, see myself understanding where the examiner is playing a trick in every question. And if you feel the same in any examination, you get a kick out of it. So that was one examination. And of course, because I've been reading it, teaching it for so long, I was expecting myself and I wanted to score well. The second was principles and practices of banking. Third was accounting and financial management for bankers. And fourth was retail banking and wealth management. In all these three, I got 54, 64, 59, which are average marks. So me being a teacher doesn't mean that I'm going to score high in every subject, every exam, because these are more technical subjects where the technical operational aspects of banking were required. And I'll be talking about my method of studying for this exam. So that also played a major role in making sure how much I score in these subjects. Okay. So let's come to now the point as to if you want to prepare for this exam and write this exam simultaneously as you're preparing for RBI, SEBI or NABARD regulatory body exams, then what path, what steps should you take based upon my own experience as to what steps did I take and what steps did I not take. तो दो तरीके हैं ये एग्जाम को क्लियर करने के, इसको लिख सकते हो लिखना चाहो तो, एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग कट है. अब हमें लगता है शॉर्टकट है तो बेटर होगा वही लेना चाहिए, बट शॉर्टकट का एक नुकसान है. शॉर्टकट का नुकसान मेजर या साइड इफेक्ट मेजर ये है दैट व्हेन यू आर टेकिंग द शॉर्टकट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, these are 4 modules and every module has 4 subjects, so total of 16 subjects in 4 modules, which is a lot. Your understanding of these 4 modules and 16 subjects is limited. It's also in bits and pieces, it's not complete understanding. तो जब आप एक्चुअल में इंटरव्यू में जाओगे, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम इज ऑल्सो टू शोकेस योर नॉलेज or to be able to discuss something with the interviewers in the interview of regulatory body exams. तो जब इंटरव्यू में जाओगे you will not be that confident automatically because you know inside that you've not read these 16 subjects and 4 modules. You've just applied some shortcut and based upon that shortcut you cleared the exam. That is the side effect of taking the shortcut. On the other hand, if you take the long cut, if you take the long route, then automatically your understanding is going to be more. But at the same time, it requires more time, it requires more energy, more dedication. So you have to figure out
which path do you want to take. मैं दोनों paths आपको समझा दूंगा, and I will also tell you why did I take one of these routes and not the other one. और फिर आपका खुद का decision है what path do you want to take. Let's talk about the shortcut first, because you might be more interested in taking the shortcut, I know. And this was also the route that I took. I did not take the long route, I took the short route because of many reasons. I don't have to go in front of an interviewer and sit and prove myself at this point in time. I know that. मेरी एज भी निकल गई है एग्जाम लिखने की. That is why I was not concerned as to what all am I learning from this. Okay, that was one reason of taking the shortcut. The other reason was I wanted to see how much of my present learning that I have, present knowledge that I have, how much can I apply out of that learning, out of that knowledge. I also wanted to see that, check that, and based upon that only try and clear the examination. I did not have a lot of interest in learning a lot of new things in this, specifically for this examination, because आपके लिए बहुत इन डेप्थ या अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है, बट मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत शैलो या फिर बहुत बेसिक थी, तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. दैट वॉज अनदर रीज़न दैट आई डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टकट. अब मैं अगर कोई नई किताब पढ़ूंगा और वो मेरे लिए कुछ नई लर्निंग लेके आ रही है, कुछ इंटरेस्टिंग लर्निंग लेके आ रही है, देन ऑफ कोर्स आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग डीपर इनटू दैट. बट आई डिड नॉट फाइंड द सेम, बिकॉज डीबीएफ एग्जाम ही ऐसा है, इट टचेज अपॉन अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. You can see yourself, 16 subjects in 4 modules in just one exam. It touches upon a lot of subjects, but it just touches a lot of subjects. It doesn't get deeper into those subjects. Okay. तो अब शॉर्टकट अगर लोगे तो क्या एग्जैक्टली आपका सीक्वेंस रहेगा उस प्रोसेस को फॉलो करने का, वो मैं बता देता हूँ. सबसे पहले तो इसमें यू विल नॉट बी अंडरगोइंग और टेकिंग एनी कोर्स. कोई भी कोर्स नहीं उठाओगे. कोर्स उठाओगे तो यू टेकिंग द लॉन्ग कट. Your first step will be to apply your present knowledge, to apply your present learning and see where do you stand vis-a-vis the examination requirements. आपको previous year papers मिल जाएंगे मार्केट में, मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में, फ्री भी मिल जाएंगे कुछ आराम से अवेलेबल ऑनलाइन. उनको मॉक टेस्ट को लिखो, उससे पता लग जाएगा एज टू वेयर डू यू स्टैंड प्रेजेंटली. जो तुम्हारी प्रेजेंट लर्निंग है, नॉलेज है, व्हेन यूर प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3 एग्जामिनेशंस, तो उसके बेसिस पे आपका स्कोर ऑन एन एवरेज कितना बन रहा है, यू गेट टू नो दैट. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टेकिंग अ शॉर्टकट, बिकॉज उसके बिना शॉर्टकट प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाओगे. नाउ दे विल बी अ लॉट ऑफ गैप्स. ऐसा हो ही नहीं सकता कि गैप्स नहीं होंगे. नाउ योर सेकेंड स्टेप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ओके व्हाट आर दीज गैप्स. 16 सब्जेक्ट्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं, मैंने सबके मॉक्स लिखे और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टॉपिक्स हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो मेरे वीक हैं, या फिर ये कुछ सब्जेक्ट्स ही हैं एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट दीज सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल 10 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 16 सब्जेक्ट्स आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट. सो योर सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी टू स्टार्ट फिलिंग अप द गैप्स. जो भी आपके गैप एरियाज हैं, इट कैन बी अ सब्जेक्ट, इट कैन बी अ टॉपिक, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन एंटायर मॉड्यूल एज वेल. यू स्टार्ट फिलिंग अप दोज गैप्स. बट हाउ डू यू डू इट? वेरी सिंपल. आपको यूट्यूब पे बहुत सारी सब्जेक्ट वाइज और मॉड्यूल वाइज वीडियोस मिल जाएंगी और उन वीडियोस में आपको टीचर्स बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हुए मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. दैट इज व्हाट आई डिड. आई जस्ट वॉच दोज वीडियोस, अ लॉट ऑफ दोज वीडियोस, एंड आई जस्ट प्रैक्टिस्ड अलोंग विद देम. जहाँ पर भी कोई नया फॉर्मूला, नया मेथड आता था, मैं वो समझ लेता था टीचर के एक्सप्लेनेशन के थ्रू और वो क्वेश्चन को सॉल्व करता था. द गुड थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज देयर आर नो मेजर सरप्राइजेज इन द एग्जाम. इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी स्ट्रक्चर्ड एग्जाम, और आपको पता होगा कि आपको इन सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने हैं. वो क्वेश्चंस क्या आने हैं, कितने डेप्थ में जा सकते हैं, दैट ऑफ कोर्स नोबडी नोज, बट हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि इसके अराउंड क्वेश्चन क्रिएट होगा. तो अगर मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन में कोई एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो उस फॉर्मूला को यूज करके आई कैन वेरी वेल कम टू द कंक्लूजन, कम टू द आंसर इन द फ्यूचर एग्जामिनेशन वेरी इजीली. ऐसा नहीं होगा कि मैं फॉर्मूला और प्रैक्टिस करके गया हूँ फिर भी मुझसे वो सवाल नहीं हुआ. दैट रेयरली हैपेंस. सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? द सेकंड स्टेप इज टू स्टार्ट फिलिंग अप दोज गैप्स. आप गैप्स कैसे फिल करोगे? एज आई सेड, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी मिल जाएंगे, बहुत खराब भी मिल जाएंगे. आप कुछ अच्छे टीचर्स ढूंढिए, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स ढूंढिए जहाँ पर आपको पता है कि टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी पे फोकस होता है. डोंट जस्ट गो बाय द ब्रांड, गो बाय द क्वालिटी, क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर.
आपने टीचर को पकड़ा, टीचर ने जो पढ़ाया है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, जो भी उससे रिलेटेड वीडियोस हैं वो देखी, उसमें जो भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं वो सॉल्व किए, साथ में समझ लिए, और बिट्स एंड पीसेज में आपने जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर ली. दैट इज हाउ यू कैन complete using the shortcut, complete the entire paper. And the third step in this is going to be to take mocks before the examination. 1 month or 15 days before the examination, you start taking the mocks, and through those mocks you try and see where do you lack and where are you doing well, और जहाँ पर भी कमी हो रही है महसूस, वहाँ पर you again go back to those videos or a lot more videos you will find very easily, और उस गैप को फिल करना शुरू कर दो. So here in this shortcut, we are relying a lot on two major things. Number one, on our present knowledge and learning, and number two, on reverse learning, wherein you try and learn not by reading something, but by solving questions, by practicing a lot of questions. That is called as reverse learning. It works very well in this exam, so you can very much apply it. That is what I applied, and without going through those bulky books, I could, without going through any course, I could clear the examination very comfortably with minimal effort. Okay, तो ये 3 steps आपको shortcut में लेने हैं. Let's say you want to actually learn the nitty-gritties of banking, the basics of banking, the basics of financial markets as well. Then you take the long route. Long route का एक और advantage है, जो भी आप यहाँ पे पढ़ोगे उसमें से बहुत सारे subjects आपके RBI, SEBI, NABARD examination में आते हैं. तो जो भी आप यहाँ पे पढ़ोगे, whatever you study here, you are going to use those subjects, that learning in your examination as well. So ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी टाइम लगा रहे हो, whatever time you're spending here, you're wasting that time. No, you're using that time to indirectly help you in your exam prep. Therefore, do not take it lightly. So I would recommend the students to take the long route, because it's going to act as a supplement, act as an addition to your preparation for these competitive examinations. Then why not do it? Okay, एक तीर से दो निशाने आपके लग रहे हैं, तो क्यों ना किया जाए. लॉन्ग रूट में प्रोसेस काफ़ी सिंपल होगा. सबसे पहले आप पास्ट ईयर पेपर्स या फिर कुछ प्रैक्टिस पेपर्स लगा के देखोगे, वेयर डू यू स्टैंड, जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आप किस दंदल में घुस रहे हो या चैलेंज क्या है. यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट योर एनिमी. इट्स लाइक योर एनिमी एट द मोमेंट. देन यू टेक अ कोर्स. There are a lot of courses available and they're very cheap, they're very affordable. You take any one course where you can connect with the teachers. You feel that this teacher is good enough, he or she is going to teach me well, he or she is going to take the job well. अब वो कोर्स लीजिए, कोर्स को पूरा पढ़िए, अच्छे से समझिए, सारी वीडियोस देखिए, समझिए अच्छे से जो भी. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. तो आप दिन में 1-2 घंटे भी लगाना शुरू करोगे या हफ्ते में 1 दिन भी लगाना शुरू करोगे, you will be able to complete the syllabus in no time. Okay, so you start by watching videos if you want to know everything that is there to know in this examination, and then you start taking mocks to check your progress. You start either watching videos of practice questions that come in before the examination, or you start taking mocks. Taking mocks is also equally beneficial because उसके आपको real time environment की practice होती है, so you get more idea as to how are you behaving, how are you doing when you're sitting in an examination hall kind of environment and you're actually taking the exam. Okay, तो mocks लीजिए, वो कोर्स के अंदर आपको mocks भी मिल जाएंगे, और mocks लेने के बाद जाके एग्जाम लिखिए. The good thing about this exam is there is no negative marking. They tried to introduce it, but they did not, and they postponed it, and it's like a golden opportunity for all the aspirants, because negative marking आते ही the exam will become a lot more difficult, because जो success जो पासिंग परसेंटेज है 45%, 50%, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. नेगेटिव मार्किंग आते ही सबके लिए और मुश्किल होने वाला एग्जाम. तो अच्छे से पढ़िए, स्टडी वेल फॉर दिस एग्जाम. इन द नेक्स्ट 6 months ट्राई एंड क्लियर द एग्जामिनेशन like I did, although I followed the shortcut because I wanted to see for myself as to where do I stand, how much do I know and how much do I not know, and whether I want to know that or not. I wanted to see all those things, but as an aspirant, I would recommend कि आप long route लीजिए, चाहे थोड़ा ज़्यादा time लगे. It's going to be worth it. If you feel that you're doing decently well in the mocks when you start your prep, then you can take the short route as well. Shortcut लेने में कोई बुरा ही नहीं है. If the shortcut you feel is teaching you enough things. Okay. NISM की बात मैंने करी थी कुछ videos, कुछ sessions पहले.
So I'm going to start with the reading very soon, and I'll keep sharing with all the aspirants out here who are watching me, who are listening to me, what is my progress, so that it becomes a challenge, it becomes something that we can do together. Probably in the community post, I will start posting my own progress. You can also post your own progress in the comment section there. और उसके थ्रू हम लोग ट्राई करेंगे अगले 1-2 महीने में NISM का बेसिक सीरीज 12 एग्जाम साथ में क्लियर करने की. ओके, that is all from my side. I'm very sure you learned something new, and after watching this session, you're going to write this exam and add to your CV, to your resume. Along with this, a lot more things we are going to do together, but this is just the beginning. Keep studying hard. The exam is near. All the best. Bye bye. Jai Hind.